Hi everyone. So today we will be studying our next topic, lesson 1, matter in our surrounding, and today we will be studying the solid state. Now, if you observe around yourself, what you will find three different types of materials. Some are there in the solid form like pen, table, book, chair, this marker pen, duster, all so many things, mostly solids you can see in your surroundings. Then there are liquids, ink, water, juice, milk, so many things are there. I need not tell you, you people are big enough. Then gases are there, hydrogen, air we breathe in, oxygen, so many gases are present. So if you observe them minutely, you will see that these three different states exist. Why? Because of the characteristics of particles of matter. Solid is also a matter, liquid is also a matter. What is matter we have done, and gas is also a matter. अब मैटर ये तीन डिफरेंट तरीकों से क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? Why one substance, one matter is existing, why solids are there, why liquids are there, and why gases are there? They are existing because of the characteristics of matter. Now we have done characteristics of particles of matter in the last class. What are these? That the particles of matter have space between them, particles of matter are continuously moving, and particles of matter have force of attraction acting between them, right? Isn't it? We have done this. Now, if these three properties, if these three characteristics are there, so we will study what will be the structure of solids, liquids, and gaseous state. This is solid state. This is liquid state, and this is gas. Now, there is space between the particles of matter. This is one of the characteristic feature, but the space between the particles in solid state is very, very less. Whereas in liquids, this space is little more, right? The particles are not so closely packed in liquid state, whereas in gaseous state the particles are free to move. बहुत दूर दूर रहेंगे particles गैस के. ऐसा क्यों हो रहा है? Why this is happening? क्यों ये गैस particles दूर दूर हैं और दूर दूर हैं, इसीलिए gaseous form में है. Why this is in liquid form and why this is in solid form? Why? Because there is a strong force of attraction acting between these particles. हमने ये पढ़ा था that there is a cohesive force acting between one particle of matter up to another particle of matter. और इस force की वजह से ये particles आपस में बंधे हुए हैं. राइट वो आपस में उनको इतना क्लोजली पैक्ड किया हुआ है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी वेरी हाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े हुए हैं इसलिए उनके बीच में स्पेस भी नहीं है. देयर इज नो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, and that is why this is in solid state. Whereas in liquid ये force of attraction थोड़ा कम हो गया. थोड़ा कम हो गया मतलब माने कि क्या हुआ, यहाँ space मिल गया, particles थोड़े से force lose हो गया. Then in gases the force of attraction is very very less, negligible है almost. तो ये बिल्कुल free हैं, they are not bound together, right? So this exactly is solid, liquid and gaseous state. So first of all we will be studying today the properties of solids, और उसी के बेस पे आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो first of all we will study all the property and then we will one by one take up how solid state is. So properties of
solids. First is they have fixed shape, size and volume. We will discuss what is it exactly. Second, they are rigid. Third, they have strong force of attraction. Next, particles are closely bound together, right? Then you can say that solids do not flow like liquids. They do not take up the shape of the container like liquids. Then they have high density. Then kinetic energy is minimum in solids. What we are left with? Solids cannot be compressed easily. And the 10th property which we are going to study today is that diffusion of one type of solid into another type of solid is very, very less. Now these are the 10 properties of solids which we are going to study today. So we'll start with number 1. So all solids have fixed size, shape and volume. What does it mean? Suppose हम इस duster की बात करेंगे. This is a solid, this is a matter, and in which state this duster is? This is in solid state, right? Now this is having a fixed shape. What is the shape of this duster? This, if you draw the shape of the duster on a paper with a pen, you will find that it is having a rectangular shape. और ऐसे भी आप इसको देख के बता सकते हैं shape कैसी है? Rectangular. And it is not going to change. This is fixed. Why this is fixed? क्योंकि solid के particles में आप ये दो बातें, जो दो points है ना, ये points बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये तो मोस्टली लगेंगे हर उसमें, इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. So because हमने अभी पढ़ा कि in the solid state the force of attraction is very, very strong. अब वो force of attraction इतना strong है कि इसके अंदर जो ये matter है, इसके जो particles हैं, उस force की वजह से आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं. They cannot move here and there. So जब वो move ही नहीं कर सकते, हिल ही नहीं सकते, they are bound together. They are closely packed. Because they are closely packed, so there is no interparticle space between them. बिल्कुल closely packed है ये structure solid का. So that means this is having a fixed shape. हम इसकी shape change नहीं कर सकते, right? Then वो बात और है कि किसी force से आप इसको change करें, वो हम second point में discuss करेंगे. Then the size. This is having a fixed size. इसको आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं.
मेजर करने के बाद आज भी ये लेंथ इतनी ही रहेगी, कल भी इतनी रहेगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत फोर्स जो स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, वो आपस में पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, दे आर क्लोजली पैक, वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, वो मूव ही नहीं कर सकते। जब वो मूव ही नहीं कर सकते तो वो लंबा ऊपर नीचे छोटा कैसे होएगा? जो ये सपोज ये एक डस्टर है तो ये इसी फॉर्म में रहेगा ना, क्योंकि ये पार्टिकल्स सारे आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोजली अरेंज्ड। इफ इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं थोड़ा सा लूज कर दूं तो क्या होगा? ये मूव करने लग जाएंगे, इधर 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 हो जाएंगे, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। 10 पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा हो जाए, साइज चेंज हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, राइट? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। दैट इज व्हाई द shape is, the size is fixed. Then definite volume, the volume of the particles, the volume of the solids is also fixed, right? Then the second point is rigid. All solids have the tendency to maintain their shape when they are subjected to some outside force. That is what we call as rigidity. क्या होती है rigidity? कि सॉलिड्स की एक टेंडेंसी है कि ये अपनी शेप को मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 2 मिनट बाद ही पिघल के कुछ और बन जाए अपने आप ही। नो, दे हैव द टेंडेंसी ऑफ मेंटेनिंग इट्स ओन शेप ऑन द सब्जेक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। चाहे मैं इसको कितना भी प्रेस कर दूं दिस डस्टर को, इट इज गोइंग टू मेंटेन इट्स शेप। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इन द सॉलिड्स। इस पेन को मैं कितना भी प्रेस कर दूं, कितना भी चेंज करने की कोशिश करूं, दिस इज गोइंग टू मेंटेन इज शेप। सो वी कैन से दैट ऑल सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। देन द नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग, दिस प्रॉपर्टी तो बेस ही है सब चीज का। सारे आंसर्स में आपका ये आएगा ही आएगा मोस्टली। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स, जो हमने वन पार्टिकल एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स होता है वो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल द सॉलिड्स। और ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज व्हाई इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली बाउंड, दे आर वेरी नियर ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज that the particles in solids, they do not flow just like liquids. Like liquids, they do not flow. आपने देखा होगा लिक्विड्स फ्लो करते हैं क्योंकि उनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, शेप नहीं है, बिकॉज of the less force of attraction in comparison to solids. So they can flow, they can slip past each other in the particles of matter in liquids. But because they are closely packed in solids, so they cannot flow. ऐसा नहीं है कि ये पेन फ्लो करने लगेगा, इसकी तो अपनी एक बाउंड्री है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है. इट कैनॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स और वाटर. देन सॉलिड्स डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. जैसे हमने लिक्विड्स देखते हैं, वाटर को आप एक बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा. एक जार में यू विल पुट अप वाटर तो जार की शेप ले लेगा. बट सॉलिड्स के साथ ऐसा नहीं होता. एक हम आप इसी टाइप का एग्जाम्पल आगे देखेंगे इसी केस पे रिलेटेड, सो दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. सो इन सॉलिड्स दिस डजंट टेक प्लेस. दे डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ये अपनी ही शेप, फिक्स शेप में रहेगा, कंटेनर की शेप नहीं. इसको आप, इस पेन को आप एक जार में डाल दीजिए, ये इसी शेप में रहेगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इट्स शेप, इजंट इट? देन, और ऐसा क्यों है? रीजन सबका यही है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे आर क्लोजली बाउंड. तो ये चेंज ही नहीं हो रहा. इतना ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग है कि ये शेप जगह बन ही नहीं सकती इसमें. देन they have high density. Density is mass per unit volume. So
In solids, they are very, very dense. Then kinetic energy, Ki I have mentioned as kinetic energy. Kinetic energy is minimum in solids. ऐसा क्यों हुआ भाई? Kinetic energy is minimum in solids, intermediate in liquids, and and it is maximum in gases. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने सॉलिड लिक्विड गैस की स्टेट पढ़ी थी, पार्टिकल्स का डायग्राम देखा था, एंड इन दैट वी हैड स्टडीड, क्योंकि सॉलिड्स में रीजन फिर वही है. इन सॉलिड्स देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज. देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, जगह ही नहीं है, आपस में बिल्कुल पकड़े हुए हैं, हैंड टू हैंड. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? The property of particles by virtue of its motion. मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक बिकॉज मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा सॉलिड्स में. आप अब कहोगे कि मैम अभी तो आपने कहा था पहले कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, बट सॉलिड्स में तो दे आर फिक्स्ड विथ सो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे कैन नॉट मूव. यस, इन सॉलिड्स motion of the particles, movement of the particles is very very less, almost negligible. Solids में तो particles इतने strong force of attraction से हैं कि ये move ही नहीं कर सकते, but they can vibrate. अपनी जगह पे तो vibrate कर ही सकते हैं ना. So in solid state the particles they are just vibrating at their own place. They cannot move around because of strong force of attraction, but they can vibrate at their own places, right? This is the difference between solid, liquid and gaseous state. As a result, the kinetic energy is very very less, right? और liquid gases में kinetic energy of the particles is very very high. तभी हमने पढ़ा था इंसेंस स्टिक की जो स्मेल थी एयर में मिक्स होके kinetic energy बढ़ गई हीट से, और क्या हुआ, फटाफट स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इन द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, बिकॉज गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज फोर्स कम है, राइट? देन सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली. सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली. लाइक इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस, इट विल नॉट बी कंप्रेस्ड. कंप्रेस नहीं होगा इजीली, राइट? चाहे मैं कितना ही फोर्स डालूं इस पर, ये इजीली कंप्रेस नहीं होने वाला. देन डिफ्यूजन ऑफ वन सॉलिड पार्टिकल इनटू अनदर सॉलिड पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस. अगर मैं चाहूँ इन दोनों सॉलिड पार्टिकल्स को डिफ्यूज कर दूँ आपस में, जैसे गैसेस पार्टिकल्स में हुआ इजीली डिफ्यूजन, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो डिफ्यूजन इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस. और वो फिर रीज़न फिर वही आ गया, क्यों डिफ्यूजन लेस है? बिकॉज पार्टिकल्स तो बहुत आपस में पकड़े हुए हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. जब इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, आपका हाथ किसी ने कस के पकड़ा हुआ है तो वो आप छुड़ा ही नहीं सकते. जब हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहे तो वो हैंड मूव कहाँ से करेगा, इजंट इट? तो डिफ्यूजन तो जब होगा ना, जब इंटरमिक्सिंग. व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन. तो इंटरमिक्सिंग तो पार्टिकल्स की जब होगी जब वो मूव करेंगे. जब वो मूव ही नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो डिफ्यूजन कहाँ से? सो डिफ्यूजन इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस, राइट? नाउ 3 examples we will study. One is the case of a rubber band. अब आप कहेंगे मैम, you are saying that solids cannot change their shape, but if we take a rubber band and you stretch it, it will change its shape. तो क्या फिर भी rubber band is a solid? Yes, it is a solid. This question mostly comes in exams. Yes, it is still a solid because if you leave the force, it will again regain its shape. और अगर वो force ज़्यादा apply कर देंगे आप, तो it will break. So why it is still a solid? Because it will regain its shape on leaving the force, right? Second example is of sugar or salt particles. Suppose you take 1 kg of sugar
and you add it in a container, it will take whole 1 kg sugar will take the shape of the container in which you have kept it. Now you will say, ma'am, just now you told us that solids do not take the shape of the container, but sugar and salts तो ले लेते हैं. No, वो भी नहीं ले रहे हैं, because each individual particle of sugar is not changing its shape. It is the whole matter which you are putting in the container. So each particle of sugar and sand is not changing its shape. It is the shape and size of the sugar particle is fixed. It is not changing. Each sugar particle is not changing its shape. Right? Then the third one. This question also mostly comes in exams. That the case of a sponge. You will say, ma'am, just now you have told us solids cannot be compressed easily. But if you take the case of a sponge, like this is a sponge, and if I compress it, abhi I have told you, I have explained you that solids cannot be compressed. This pen, agar मैं चाहूँ इसको compress करना, because it is a solid, so it cannot be compressed. But this is also a solid form, this sponge. But if I try to compress it, it is compressing, isn't it? It is little bit changing its shape. We are able to compress it. Now, why this happens? Why this happens? Because the sponge is having small pores, and in these pores air is trapped. Now, as soon as we compress it, we put force, the air is expelled out and we are able to compress the sponge. So that is the reason, but still it is a solid. So this is the reason why we are able to compress the sponge. So now I hope all this solid state must be clear to you. जिसका बेस जो है वो ये प्रॉपर्टीज हैं. If you learn it, if you apply these two basic things in the reasoning of solid, liquid and gaseous state, you will be able to solve every question, I am sure. So that they are having strong force of attraction and about the interparticle space, right? So revise your lesson, learn your lesson till my next class. Thank you.